Hi, everybody. So, everybody, am I audible? Please, in the comment box, just say yes or no. If you am not audible, tell me. Okay. Yes. Yes. Sir. Let me just. So, yeah, everyone. Hi, myself Gaurav Patil, and today we're going to discuss about the Docker, Docker related commands, Docker architecture. Today's topic. So, I have created a small PPT. Okay. So today I will discuss this. This is a basic of the Docker, introduction to Docker. And hi everyone. Hi, myself Gaurav Patil. So we are covering more about the Docker related Docker files, Docker architecture, Docker commands, basic. Okay. So this is a 1 hour. We'll try to cover up all Docker related concepts in 1 hour. Okay. So hi everyone. So we'll wait 1 2 minutes plus because then we'll start. Okay, let me check related. Okay, all things are fine. Check. Okay, 1 2 minute. Yeah. Hi. I'm good. How are you guys? आप कैसे हो सभी लोग? आप सब भी कैसे हो? How are you? I'm good. How are you? We'll wait for 1 minute. Okay. Okay. Let's start. Okay. So I'm sharing my screen. Introduction to Docker. Okay. Yeah, guys. In between, if I lost my voice, any issue with the mic problem, okay, so just in the chat box you can mention these things. Okay, so we'll focus about the Docker. Three things I need to check. Everything, connectivity and all point of view, if all things properly working or not. Yeah. Yeah. So yes, I will give my introduction first. So guys, myself Gaurav Patil. Okay, and I'm working in this industry from last 4 years, you can say. So I'm aware of these concepts. So day to day life, I'm dealing with this Docker, Kubernetes, all DevOps. Start about the Docker. So DevOps means development plus operation. This is one of the field now from last 7 8 years. It's very you can say important in the market. People looking for the jobs for a DevOps field. They're looking for the DevOps mentorship, DevOps related training, everything. So DevOps, it's very important. And DevOps mean development plus operation. It is a joint combination of two words: development plus operations. So development, what happened in the early days of IT, you can say, uh, develop people, those who are in the development phase, they are only one who is also and there is a gap between operation and development. So to reduce this gap and my deployment time, my productivity, all these things need to increase. DevOps will basically introduce. That's the main purpose. So if anyone asks you what is a DevOps role, so it is a collaborative field, you can say. So collaboration between a development and operations. So these tools like Docker, Kubernetes, this basically helps us to reduce the deployment time. Okay, and you can basically deploy your application whichever language you have written. Okay, let's say in C, okay, in Python, your Node, npm, all these kind of applications.
So my basically objective is to reduce the deployment time. Build time should be faster, and I can basically meet up the you can say client requirement, okay, as early as possible. So that is the what. And every company, basically every whatever in your field, those who are working, they wants to basically clients wants to deliver the application as early as possible, okay. So for this uh, these tools basically come into the pictures, okay. And you can say you can basically many tools are there. DevOps is one of Docker is one of them. CI/CD, okay, Terraform, cloud related, all kind of things. So our today's class basically objective is to deal with the Docker. Introduction to Docker, how to master in the Docker, okay. Why Docker is important. I will try to explain this Docker concept in very layman language, okay. So yeah. हिंदी बेसिकली गाइज हिंदी में नहीं कह रहा हूँ बिकॉज वी देर आर स्टिल many of them they don't understand Hindi, so we'll try to focus in English also. मैं बीच बीच में हिंदी बोलते जाऊंगा, okay. We'll try to cover up in Hindi and English, but mostly in the English part, okay. So, okay, let's start. So, what is Docker first of all? Sir, ये Docker क्या होता है? What is Docker? Why it is so important? And DevOps journey basically, if anyone asks you, sir, from which platform I need to start, so anyone can tell you that, sir, you should start with the Docker, sir. Docker is very easy to learn. Docker is very, you can say, anybody who is from any background, if he wants Docker, he will basically get understanding of Docker very easily, okay. So that's our purpose of today's class. So we'll focus how to basically install Docker and what is Docker and all. So basically, what is Docker? So Docker is an open source tool. What is open source, sir? Sir, open source means whoever basically they get a free accessibility. And the second thing is the code of these tools, whichever is open source, it is available in GitHub and anywhere. Okay, so if you want customize your own product, you can do that. So that is called an open source platform, and Docker is one of that platform. So Docker, what it basically do, so it basically automates your deployment, scaling, application management, okay, using containerization. So you might have heard that, sir, Docker जब भी आता है ना, तो containerization word basically comes into picture. What is containerization? What containers basically do? How basically deployment, how it fastens the deployment process, how automates the deployment. So what happens? So let's focus into a very simple kind of thing I will try to explain. So understood that there is a I will try to explain it in very layman language, okay. So what happens, let's say I am a developer and I am developing a application, okay, and that application I need to deploy, okay. So let's say there is a so much dependency of that application. So example is, this is a Python application, Flask application. So you have created, you have basically developed this application with the help of Python 3.8, okay. And there is a application dependencies, okay. So Python के भी बहुत सारे packages होते हैं, okay. So let's say packages like pip install, you need to install with the help of pip install. Let's say PyCharm, let's say all this Python related Flask basically module, all this modular you have installed one by one. Now you have deployed an application, you have created an application, okay. अभी एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद सर क्लाइंट का एनवायरनमेंट कैसा है, आई डोंट नो. So there is a, you might have heard in the when you worked in the offices, you know, there is a different environment, UAT, SIT, production environment, development environment, okay. So सर मुझे हर एनवायरनमेंट के लिए अलग 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 एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा क्या? No, sir, there is no need. So that is one problem. Second problem is, sir, let's say क्लाइंट के पास तो मैं जिस Ubuntu OS में काम कर रहा हूँ वो OS ही नहीं है. So how he will work on that? Okay. Second thing, sir, every time whenever client is working, he needs to install all these packages. And let's say he don't have Python version. I have worked with Python 3.8 and he don't have Python 3.8.
updated version. Now he needs to install, but there is already 3.10 version is there in his basically OS platform. So what to do? Okay, so in that basically in that point docker basically sir help you. So docker क्या करता है, आपका जो भी पैकेज है, कोड है, whichever code you have written, basically compile all the code in one kind of dabba. I'm saying it's very simple kind of word, okay, don't take it as it is. So it is kind of a container, okay, it's kind of docker, it's kind of container, and all your dependencies or your python packages you have installed inside that, okay, your python dependencies, your libraries, your os dependencies, everything inside that you can say container or that dabba, okay. Now what you will do, you will store that container in somewhere else, okay, जहां पे हम लोग स्टोर करते हैं. तो ओपन सोर्स एक ऐसा टूल है सर जैसे जहां पे सभी लोग सोर्स कर सकते हैं. जैसे कि आप गिट पे काम करते हो, यू वर्क ऑन अ गिट, ओके. सो आप गिट से आपका कोड जो है वो पब्लिक कोड कहाँ पे सेव करते हो, कहाँ पे सेव करते हैं हम लोग, सो गिट हब पे सेव करते हैं. वैसे डॉकर के जो भी ये डब्बा मैं कह रहा हूँ उसको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में और डॉकर के ऑफिशियल लैंग्वेज में कहते हैं उसको डॉकर इमेजेस. सो सर अभी पता चल गया सभी को व्हाट इज इमेजेस. सो इमेजेस आर बेसिकली all the application related everything. It is kind of package, okay. Every dependency of the applications, everything prerequisites, everything, it is inside that image. एंड आई एम स्टोरिंग दैट इमेज इन समवेयर हब, जहां पे हम लोग बेसिकली स्टोर करते हैं. सो गिट रिलेटेड कहाँ पे सेव करते हैं, गिट हब में. सो डॉकर इमेजेस कहाँ पे सेव करेंगे हम लोग सर, डॉकर हब में. दिस इज अ पब्लिक रिपोजिटरी, ओके. देर आर प्राइवेट रिपोजिटरी ऑल्सो. इफ यू वर्क ऑन Amazon, so Amazon container repository is there, okay. If you work in somewhere, there is like a JFrog is one of the repository. So if you working on Azure repository is also there. So yeah, so uh, so this is all about the packages, okay, images related issue. So this is the image, okay. Now you understood what is the image. So you have created the image, you have add your all dependency in that image, okay, all your packages inside that. You store that image in somewhere else. So where we are storing it in docker hub, sir, okay. Now client wants to run in his own environment, okay, wherever environment he is working. So what he will do, he will pull that image and he will trigger the image. Whenever he trigger the image, that self called as a container. So okay, so this is the difference between the image and the container, okay. तो मैंने एकदम लेमन लैंग्वेज में अभी आपको समझाने का ट्राई किया, फिर एक बार समझाता हूँ. इमेज मीन्स व्हाट. सो इट इज द you can say compilation and of the packages of an application, its dependencies, and these image will be same for any kind of environment. So अगर उसके पास Ubuntu का पर्टिकुलर पैकेज नहीं है, उसके पास OS नहीं है, लिनक्स का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, एनीथिंग, he can basically run the image, and whenever you want to run the image, that is called as a container, okay. So if you are going to trigger the image, it is called as the container. So that is the main thing, and that is the docker. Docker आपको क्या करता है sir, it is very helpful to my, it is kind of different environment, it is ensuring consistency, okay. So that is the definition. So if you read the definition, docker is an open source platform that automates the deployment. सर इसने क्या किया, अभी डिप्लॉयमेंट की प्रोसीजर को ऑटोमेट कर दिया. एंड द सेकंड थिंग इज स्केलिंग. स्केलिंग मींस व्हाट. सो लेट्स से one your application, it is having a very high intense traffic application, okay, and at a time 10-50 users are working on that individual application, okay. So automatically what's happened, the docker will try, docker has this capacity auto scaling point of view. So it will, you can scale your application. So image जो है वो बढ़ जाएगी, so number of images gets increases. So that is called a scaling. So if traffic gets increased, you can scale your application. So that is also, it is helping, and it is managing your applications. So this process, whole process is called as the containerization. So containerization, the tool name is a docker, and the process you can call it as a containerization, okay. So and the second definition, container basically package an application and all its dependencies, and it ensure that it should be consist in every kind of environment, okay. So you understood what is docker.
So I have a different environment. One as a development, another environment is a testing, another environment is a production, UAT, SIT, any kind of thing. Docker is going to help me. Okay, so this thing complete. So why to use a Docker? Okay, so I think this thing having okay guys, कुछ समझ नहीं आ रहा guys, I'm telling you in very layman language, so don't worry of it. Also in the you can basically google it about a Docker and understood the architecture and point of view. So I'm trying to giving you this about very layman point of view. Okay, certificate point of view, yeah, I will introduce in the comment box, don't worry of it. Okay, आ गया मेरा सर्टिफिकेट. हाँ, so why to use a Docker? Okay, now we'll focus on the Docker part. Okay. So first of all, sir, portability. So I have said it is a interdependent kind of environment. So you can your image basically you have create a image. You can portable. You can transfer this image anywhere. Okay, in any kind of environment. So that is why we use a Docker. So this is one of the very important thing. So containers or Docker's images are run consistently across a different environment. Okay, so it eliminates that you said that sir it works only on my machine. No, no, no. Your Docker image will work on any machine. सिर्फ आपको Docker install करना पड़ेगा. As a system, you need to basically install a Docker. So that is what a Docker portability helps you. Second one is the isolation, sir. So if you are working with many these kind of images, so they are isolated to each other. And हम लोग क्या कर रहे हैं basically we are creating a image and we are triggering it on somewhere X. Okay, किसी के भी environment में we are trying to deploy it. सो दिस इज व्हाट इट इज. जिस भी एनवायरनमेंट पे हम लोग कर रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग होस्ट सिस्टम. ठीक है, जैसे अभी मैं मेरे सिस्टम पे डॉकर आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ. सो इट इज आइसोलेटेड सिस्टम and it is not basically communicating with my host means it is not basically conflicting with my host machine. It is running as a parallel. So that is what isolation. So Docker gives you a better isolation, and it can. So how it communicates, sir? It communicates with the help of networking. Okay, so ये हम लोग बाद में cover up करेंगे. अभी बस ये basic चीजें समझ रहे थे. ठीक है. Third thing, efficiency. So these images, these are very lightweight images, very हल्का images होती है. तो आप आपके system पे ये resource crunch नहीं करती. So basically very lightweight, which has the host. You can work with basically it is running on my host. Okay, so हम इसी के कुछ host के you can say physical resources basically it utilize. So that's why it share the host OS kernel, and that's why it is very different than your virtual machines. So sir ये virtualization में use होता है. So virtual machines if you know, so virtual machines क्या होती है कि हमें एक physical resource से ही directly एक अलग से virtual machine create करनी पड़ती है. But Docker related, you don't need to basically create a separate thing. Docker, you just need to install a Docker and create the images. Okay, with the help of Docker file and all that I will cover. And the fourth point, which I have already said, it is a very useful for a scalability point of view. Okay, so if you want to scale your applications, if you reduce your application scale, okay, so in that perspective, Docker is very helpful. Okay, so yeah. So आज की the today's class we are going into cover in the four aspects. So first one is the containers, images, Docker file, and a Docker hub. So these are the main you can say if you want to master yourself in the Docker concept, you need to focus on these four concepts. Okay, so containers, images, Docker file, and Docker hub. So हम लोग first of all discuss करते हैं what is the images. Okay, मैं अभी images के ऊपर help करता हूँ. सो इमेजेस सर क्या होता है? सो जस्ट वन हैव सेड यू आपने एप्लीकेशन आफ्टर क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन, आफ्टर डेवलपिंग योर एप्लीकेशन, डू नॉट यूज क्रिएटिंग, डेवलपमेंट इज द गुड वर्ड. आफ्टर डेवलपिंग योर एप्लीकेशन you have basically compile all the dependencies in one thing. So आप किसकी help से कर रहे हो? So sir you need a Docker file.
Okay, you need to write down all your steps to create the image inside the Docker file. So Docker file is what? Docker file is a file, simple, you can say a file which has a one format how to write down. Okay, आपको उस format में docker file लिखनी है, and if you build your image with the help of docker file, image is going to be created. Okay, so that is called the images. ओके, सो डॉकर फाइल में क्या होता है सर? डॉकर फाइल में स्टेप्स होती है हाउ टू क्रिएट एन इमेज. इमेज बनाने के लिए, टू बिल्ड एन इमेज, यू नीड टू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इनसाइड द डॉकर फाइल. ओके, सो दैट इज अ डॉकर फाइल. आप ये डॉकर इमेजेस कहाँ पे स्टोर करने वाले हो? विच आई हैव सेड हब. सो व्हाट इज द हब? दैट इज अ डॉकर हब. ओके, so these are the four key concepts, so we'll deal in it. So let's understand how Docker works. I will try to show you with the help of Google पे दिखा देता हूँ. Yeah. Isolation means creating the boundary. Okay. Yeah. Don't worry. We'll try to, in the last 5 to 10 minutes, I will cover up the questions related to Docker. Okay. So let's focus Docker architecture. This is the Docker architecture, guys. I just want to show you how Docker architecture basically is. Let's focus this image. Okay. इसी के रिलेटेड गिग्स फॉर गिग्स में यू हैव दिस डॉकर आर्किटेक्चर. सो दिस इज द योर क्लाइंट. ओके, what is the client, sir? So sir, first you need to install a docker. So in the today's class I will show you how to install docker also. Okay, so docker is kind of a client server architecture, sir. So this is your client, this is your host, and this is the registry. Registry means you can say a docker hub where you are storing your image. Okay, so in the docker host, your basically docker related process is running. Okay, so Docker is work as a daemon, sir. Sir, you can ask me what is daemon. Daemons means, sir, process which are running background. Okay, inside the backgrounds. It is not dealing with your Unix architecture. Okay, so if you reboot your system, it automatically starts. So that is called a Docker daemon. Okay, so Docker as a daemon run karta hai. Okay, so with the help of Docker, Docker is running. So Docker is kind of client server architecture. Okay, so client क्या करता है? I am the client. I will run the commands. Okay, Docker build command, Docker pull command, Docker run command, Docker push command. So I am the card. So I am asking this command to whom? Docker service. Okay, the daemon which is running, that is called a Docker host. So I'm asking the information that I need to build an image. So what is the command? Docker build command. So Docker daemon will understand and it will create the image. After that I said, sir, Docker push. So I will push this image which is there inside my host to some registry. Okay, now I need to pull the image. So first is Docker pull command. I am as a client, I will ask this command to Docker host. Docker host will understand, it is like a brain. Okay, it will understand that it need to pull the image. So it will pulling the image from the registry. Ah, sir. Yes, yes. Screen is already late. ओके ओके. तुम्हाला पण नाही होते? तुम्हाला पण नाही होते का? So now screen visible, guys. I just have reshare the screen. Some of them you saying that the screen is not visible. So I just reshare the screen. So if screen is visible, just now it is okay. Okay. Thank you. So yeah, I'm sharing the screen. So this is the architecture of you can say a Docker. So what is this? Is the sir? This is the you can say this is the client. This is the host, and this is the registry. Okay. So let's install a Docker. Okay. So where to do it, sir? I will do it in the AWS. Okay. Parallelly we'll work on the AWS. AWS पे हम लोग एक EC2 create कर लेते हैं, and there we will work to basically create a Docker image and all. I will help you to install everything. Okay, don't worry of these things. Now
Now visible. Yeah. Thank you. No problem. Okay. So guys, I am telling you how to show you, and I will show you the commands to basically install Docker related commands. Okay. Let me connect first of all my instance. Okay. Yeah. So parallelly, I will do that. So first you understood what is the Docker. Okay. So Docker मतलब क्या है? Docker क्या करता है? As a process, it is running. Okay. फिर से हिंदी में I am explaining you. Docker it is a kind of a daemon process, and you as a client basically putting all your commands inside it. Okay, so कौन सी command है? Docker pull, Docker push, Docker build, these are kind of the commands. Okay, तो हम लोग अभी एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं. To launch an instance, I will show you how to basically connect a Docker. Okay, AWS AMI का image I am going to create, and instant time I am selecting. So this architecture you understood. So this is the architecture overview. Three parts are there: Docker engine, Docker daemon, and Docker CLI. So CLI means what? Where you are basically interface with your Docker. Okay. So it's kind of command line interface. So from the CLI, I am putting the commands. Okay. So client is basically work with the CLI. Okay. So that is called a command line interface. And Docker daemon is the service which is running in the background that manage my Docker containers, and this is the main important thing is the Docker engine, that is core component which running manage and doc component containers. Okay, so the T2 micro we will use for any proceed with the Docker instance, any kind of just launch an instance. Okay, I will show you how to create a Docker, how to install a Docker in your system. Okay, that is the whole perspective, whole point today for to discuss. Okay, don't worry of it. I will show you everything. Yeah. 1 minute, guys. I'm connecting my instance. Okay. Are you there? Yeah. Yes, guys, and in the meantime, please subscribe, follow Skill Elected. Okay, our boot camp, everything. Okay, basically we will provide you a certification, everything. Please also follow the YouTube channel, subscribe it if you are not yet subscribed. Okay, so we'll basically provide to many boot camps, and we'll give you information. Okay, about this. So yes, guys, I am right now inside my CLI. Okay, so let's first go your sudo su and let's install a Docker. Okay, so what is the command to install a Docker? Yum install. So guys, I'm basically installing a Docker. Okay, so those who understood, this is a basic Amazon machine image where I am want to install a Docker, and I will show you Docker commands, Docker related information. Okay, everything. So I just have inside the Docker my CLI. Everybody is able to see my screen. Yeah. Everybody in able to see my screen. Anybody has any issue, please mention in the chat box. Okay, I will try to cover up. Anyone any issue? हाँ नाम बता दो यार. Okay. Yes sir. Okay.
ठीक है, ठीक है, ठीक है. So guys, we have introduced. So if you want to check whether Docker is installed properly or not, just command use Docker version. Okay. So it is saying that sir Docker daemon is running or not. So you need to check systemctl status Docker. It is saying that Docker is not installed. So you need to basically install a Docker, but you have to start the Docker. So this is the process, guys. Whenever you dealing with the daemon process, you need to basically check whether the process is running or not. Okay. So it is saying that my process is running Docker images. Okay. So whenever you want to check if Docker is installed properly or not in my system, you basically check with the command Docker version. Okay. Docker version. So हम लोगों ने अभी कौन सी स्टेप फॉलो की? सर फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया? इंस्टॉल किया yum install docker. Okay. Understood? This is the first command we use, yum install docker. यहां से हम लोगों ने क्या किया? इंटरनेट से हम लोगों ने डॉकर को इंस्टॉल किया. अभी इंस्टॉलेशन की स्टेप्स के बाद हमें क्या करना होता है गाइस? सो बेसिकली हमें स्टार्ट करना होता है हमारी सर्विस को. तो हम लोगों ने क्या किया? हमारी सर्विस को बेसिकली जस्ट स्टार्ट किया. विच कमांड से? सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर. ठीक है. इस कमांड से हम लोगों ने हमारी सर्विस को स्टार्ट किया. अभी हमें अगर चेक करना है कि डॉकर काम कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? डॉकर वर्जन ये कमांड चेक करेंगे. इससे क्या होगा? हमें क्लाइंट और इंजन ऐसे दो यूनिट आने चाहिए. अगर ये आ रहे हैं तो भी समझना कि डॉकर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है. सो अभी चेक कीजिए डॉकर वर्जन. जैसे ही मैंने कमांड दिया, पहले आया क्लाइंट ब्लॉक. ओके. सो इट इज सेइंग द क्लाइंट वर्जन, API version, Go version, Git commit, build, OS architecture, and the context. This thing should be there if you use the Docker version command. And the second is the client server. So हम लोगों ने, मैंने अभी बताया आपको, आई हैव जस्ट सेड. सो फॉर इन द डॉकर आर्किटेक्चर, टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ओके. सो व्हेन यू रन द कमांड डॉकर वर्जन, क्लाइंट साइड आनी चाहिए जिसमें वर्जन एंड ऑल शुड बी देयर, एंड सर्वर साइड आनी चाहिए. ओके. I think I have given you the basic idea how to install a Docker, and how to check whether Docker properly install or not. Okay. This thing is clear. Okay, okay, okay. No issue, no issue. Thank you, guys. Thank you. Now I am giving you how to basically pull the image from internet. So हम लोग अभी क्या करते हैं सर? एक कोई भी इमेज को इंटरनेट से पुल कर लेते हैं. ठीक है. टू पुल द इमेज यू नीड टू यूज डॉकर पुल कमांड. कौन सी कमांड करनी है? डॉकर पुल कमांड. डॉकर पुल से क्या करने वाला है सर? ये एक इमेज हम लोग इंटरनेट में भी सर कहां से करने वाला है सर? डॉकर बाय डिफॉल्ट कौन सी रजिस्ट्री पे कनेक्ट करेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डॉकर हब पे कनेक्ट करेगा. इट विल कनेक्ट टू डॉकर हब बिकॉज इट हैज ऑल काइंड ऑफ, all the public images are stored inside my Docker hub. So if you go to Docker hub, you will get idea of the all your basically images. This is the hub. This is the image library. All my application images. Let's say Python. Let's say Ubuntu. Let's say Nginx. Any kind of image are already there on internet with the help of Docker Hub. So हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? Docker Hub पे. It is a public repository, sir. Okay. So if you want to search any kind of image, let's say I will search MySQL. So MySQL की image मुझे यहीं पे मिलेगी sir. Okay. Understood? This is the image. 5 days ago, this image is installed. It's updated. कितनी बार पुल किया and all, it is there. Okay. Understood? So हम लोग अभी MySQL की इमेज कैसे पुल करना है मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके. आप इफ यू क्लिक ऑन द MySQL, दिस इज द कमांड. यहीं पे राइट साइड में कमांड दिया है, डॉकर पुल MySQL. ये कमांड आपको सर कॉपी करनी है. कॉपी करके आपके CLI पे पेस्ट कर देनी है. मैं अभी यही कमांड से पुश कर दूंगा. तो इसने क्या किया? डॉकर पुल MySQL. ये क्या करेगा सर? इंटरनेट से MySQL की इमेज पुल कर रहा है. इट इज एक्सट्रैक्टिंग द इमेज. I'm sorry, extracting. It is pulling the image from Docker Hub library, image name called as the MySQL. Understood, everybody?
Everybody understood in the comment box? No issue, no issue. Okay, everyone, if there is any issue, chat box you can mention. Okay, if my voice, my screen related issue, please tell me. Okay. सो अभी हम लोगों ने कौन सी इमेज इंस्टॉल की है सर? डॉकर पूल माई सिक्वेल। अभी हम कोई और इमेज इंस्टॉल करते हैं सर। सर आप एनजीनेक्स की इमेज करके देखो। एनजीनेक्स हम लोगों ने अभी माई सिक्वेल के बाद कौन सी इमेज इंस्टॉल की सर? एनजीनेक्स की इमेज हम लोगों ने इंस्टॉल की। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके ओके ओके। So two images we have installed. Now, sir, I have installed where I have pulled these images. I have pulled from internet to my local. Local मतलब कहा मेरे ये जहां पे मैं ये EC2 इंस्टेंस है ना, उसके EC2 इंस्टेंस के अंदर है अभी मेरी इमेज। तो सर मुझे चेक करनी है कौन सी इमेजेस है। तो आपने अभी कौन सी इमेज की? माई सिक्वेल और एनजीएनएक्स, दो इमेज की। तो मैं कैसे चेक करूंगा सर? डॉकर इमेजेस कमांड, with the help of docker images you can get that sir you have just install a two image. कौन सी इमेज? nginx और mysql. Understood? So docker images command gives me the idea about the images which is there inside my local host. Okay, so there are two images, mysql और nginx. दोनों के टैग हो क्या है सर? सर टैग है लेटेस्ट, लेटेस्ट। तो आपने कोई टैग दिया था कि आपने सिंपली कहा था nginx, तो अपने आप लेटेस्ट टैग की जो भी इमेज है वो आपके बेसिकली इन योर होस्ट इट इज पुल्ड फ्रॉम डॉकर हब। अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ सर आई वांट टू बेसिकली इंस्पेक्ट दिस इमेज। तो हम इसको इंस्पेक्ट कैसे करते हैं सर? इसको इंस्पेक्ट करने का कमांड है डॉकर इंस्पेक्ट, गिव द इमेज नेम nginx। सो बेसिकली डॉकर कैसे काम करता है ये मुझे अगर किसी ने पूछा तो सर डॉकर काम कैसे करता है? डॉकर लेयर बाय लेयर काम करता है। सो बस होता क्या है, डॉकर फाइल के अंदर हम लोग 1 2 3 4 ऐसी स्टेप्स देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज काइंड ऑफ योर फर्स्ट लेयर, सेकेंड स्टेप इज काइंड ऑफ योर सेकेंड लेयर, थर्ड स्टेप इज काइंड ऑफ योर थर्ड लेयर। सो जब आप डॉकर इंस्पेक्ट बताते हो कमांड को इमेज का, तो इसमें सारे लेयर्स की टोटल इंफॉर्मेशन बेसिकली वी विल गेट। इसके बारे में हम और इन डेप्थ आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस थिंग? See, this is the image related total information is there. अभी ये आपको समझ में नहीं आएगी, ये हम और इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव गिव यू बेसिक डॉकर कमांड्स आई वांट टू एक्सप्लेन। सो हम लोगों ने सर फर्स्ट कौन सा चेक किया? डॉकर वर्जन, डॉकर पूल। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस थर्ड कमांड, डॉकर रन। ओके ओके, सॉरी। तो सर आप माई सिक्वेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी जा सकते हो, माई सिक्वेल रन एज image. Okay, if you search this you will get an idea how to run mysql as a image. Okay, so आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं या फिर बेसिक स्टेप्स जो mysql के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से you will get an instance how to run the image. So sir, basically running an image means what? You can ask me, sir, running an image means what? So sir, running an image means image is there in your local system. Now you are going to trigger that image, that is going to create what? Container. So docker run command से हम image को convert कर रहे हैं किसमें? कंटेनर में। ये समझ में आया everybody? Docker run command basically gives you basically trigger the image. You need to specify the image name and it will run it as a container. Understood everyone? So that is a called a command docker run. हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे चेक करते हैं हाउ टू रन इमेज। ओके, सो आपने सर अभी इमेज को रन किया है। नाउ आई एम गोइंग टू रन द इमेज। सो दिस इज द स्टार्ट अ माई सिक्वेल सर्वर इंस्टेंट। यू कैन गिव द इमेज नेम। सर अभी हम लोग ये कमांड को कॉपी कर लेते हैं। लेट कॉपी दिस कमांड एंड लेट्स पोस्ट दिस कमांड हियर। First of all you just mention the docker images name. Okay, so command क्या है सर? docker run
इसमें आपको कंटेनर का नेम देना है, तो हम लोग करते हैं सर डीबी इंस्टेंस, ठीक है। Restart and failure on D and going the image name. What is the image name? Just image जो आपने डाउनलोड की, MySQL colon latest. This will basically run command, basically create a container. Docker run command से क्या मिलता है? कंटेनर। अब ये कमांड को बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपने पहले क्या किया सर? डॉकर रन किया, उसके बाद आपने नेम दिया। किसका नेम दिया? तो हम लोग क्या करने वाले? क्रिएट कंटेनर। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर, सो आई नीड टू गिव द कंटेनर नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ माय कंटेनर? सर कंटेनर का नेम अभी आपने दिया डीबी इंस्टेंस। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंटेनर? डीबी इंस्टेंस। आपने दिया सर हाइफन हाइफन रिस्टार्ट। जब जब ये फेल्यूर होगा इट शुड रिस्टार्ट। ये कमांड बाद में देखते हैं। हाइफन डी मतलब क्या सर? डिटैच मोड में, मतलब हमारे पीछे डिटैच मोड में ये रन करना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या किया? इमेज का नाम बेसिकली मेंशन किया। सो दिस इज द कमांड टू ट्रिगर द इमेज एज अ कंटेनर। और अगर मुझे इमेज को मैं ट्रिगर करता हूं और उसे मैं चेक करना है कि वेदर image running properly or not, what is the command? Docker ps. So docker ps command will give you an idea about the container, whether container is running or not. So it is saying that sir it is failuring, ये एक एक सेकेंड के बाद रिस्टार्ट हो रहा है। इसका रीजन हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हमें कमांड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। So docker ps command basically gives me idea about the, after triggering the image, it will run the image as a container. Understood everyone? So this is my container. So container का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना है? कंटेनर आईडी बना है सर, एक यूनिक आईडी जनरेट होता है। उसके बाद आपने कौन सी इमेज यूज की? सर माई सिक्वल लेटेस्ट इमेज आई हैव इंस्टॉल्ड, आई हैव यूज्ड। ओके, कमांड कौन सी है सर? ये बैकग्राउंड में जब आपने इमेज बनाई है ना, तो ये कमांड पहले से ही इमेज के अंदर दी हुई है, डॉकर एंट्री पॉइंट कमांड। ये कब मैंने क्रिएट की सर? 4 सेकेंड्स एगो। ये जब कमांड मैंने चलाई ना, उसके जस्ट 4 सेकेंड्स एगो पहले मैंने इमेज क्रिएट, कंटेनर क्रिएट किया था, नॉट इमेज, कंटेनर। हाँ, what is the status of container? Sir, it is keeps restarting in 1 second ago. It is giving you information about the container. Sir, आपने कोई port mention किया है क्या? No, sir. That is why port column is empty. And what is the name of the container? Name of the container is the DB instance. Everybody understood? So docker ps command giving me the container information. और अगर आप हाइफन ए दोगे तो ऑल कंटेनर, हाइफन ए इज गिविंग यू ऑल कंटेनर। अगर आप कंटेनर की इमेज को बंद कर दे, कंटेनर को आप बंद कर दो, तो कैसे बंद करोगे सर? डॉकर स्टॉप एंड गिव द कंटेनर नेम डीबी हाइफन इंस्टेंस। अभी आप अगर डॉकर पीएस कमांड चलाओगे, यू वोंट गेट एनीथिंग। आपको कोई भी कंटेनर की इंफॉर्मेशन मिली है क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज यू हैव जस्ट स्टॉप द योर कंटेनर, यू हैव जस्ट स्टॉप योर कंटेनर। सो व्हाई आई वांट टू चेक कि मैंने जो जो कंटेनर स्टॉप किए ना वो भी मुझे देखने, तो कौन सी कमांड चेक करेंगे? डॉकर पीएस हाइफन ए, ए इज फॉर ऑल। ओके, सो इसमें अभी मैंने जो कंटेनर बंद किया था उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल गई। सभी को समझ में आ रहा है? बेसिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, image means logo, no sir, image means all the packages, compilation of packages. Okay, I'm going to give you the how to create a image also. So आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स बेसिकली क्लियर किए। एवरीबडी अंडरस्टूड? आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अभी भी कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा बाउंसर हो रहा होगा। फॉर दिस आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दैट डॉकर इज अ वेरी सिंपल टर्म। आपको सब समझना है कि डॉकर काम कैसे करता है, डॉकर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे चलती है, डॉकर पैकेजेस कैसे बिल्ड करता है, एंड हाउ टू रन अ इमेज एज अ कंटेनर। ओके, अभी सर मुझे कोई पोर्ट अगर इसमें देना है तो मैं कैसे दूंगा? अभी मैं क्या करता हूं, अगर जो कंटेनर है जो मैंने स्टॉप किया उसको सर आप प्लीज परमानेंटली किल कर दीजिए। तो व्हाट इज द कमांड? डॉकर किल एंड गिव द कंटेनर नेम db hyphen instance।
It is saying that it will not kill. So I will use rm command and I need to forcefully remove because it is running, it is a stop container. So I want to remove it forcefully. So docker rm is the command to remove the container. So अगर आप अभी docker ps hyphen a देखोगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेनर की नहीं मिलेगी. Okay, everybody understood these things? Just guys, 1 minute. I have a one urgent phone call. Sorry, guys. So I think you have cleared this thing. So Docker architecture we have covered, Docker images we have covered, Docker container we have covered, and Docker hub related information also we have covered. So where is basically image going to image store कहाँ पे होती है? Docker hub पे होती है. डॉकर इमेजेस देखने के लिए कौन सी कमांड है? डॉकर इमेजेस इज द कमांड. इमेज को इंस्पेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड है? डॉकर इंस्पेक्ट कमांड. ओके, टू चेक द कंटेनर व्हाट इज द कमांड? डॉकर पीएस कमांड. टू चेक द ऑल कंटेनर व्हाट इज द कमांड? डॉकर पीएस हाइफन ए कमांड. टू स्टॉप द कंटेनर व्हाट इज द कमांड? डॉकर स्टॉप कंटेनर नेम. To remove the container permanently, what is the command? Docker rm hyphen f forcefully and give the container name. I think everybody understood. This is the basics and a very, you can say, layman point of view. I am giving you information. So for that, आप ही को in detail basically डॉकर के ऑफिशियली डॉकर के चैनल पे आप चेक कर सकते हो. तो डॉकर if you add docker you will get a docker related. So this is the guys official docker, you can say, website where you can get all information about the docker. So please use this basically to understand the docker related concept, how docker build, how to run the image, how to verify, how to test, everything in detail is given there. So this is our purpose. Today class we have focused mostly of all these things. Okay, Docker stop. So that is the this is from my side. I'm wrapping this you can say information. If you have information about the docker you can mention in the chat box. Okay, हम लोग और कुछ चीजें इंटरनेट से देख सकते हैं. अभी हमें और एक चीज सर, अभी जैसे आपने माई सिक्वल किया वैसे ही मुझे Nginx को रन करना है. सो हाउ आई एम गोइंग टू रन Nginx इमेज? सो मेरे पास इमेजेस कौन सी है? डॉकर इमेजेस. अभी हम चेक करूंगा कौन सी इमेज है सर? Nginx की इमेज है. सर पहले ये माई सिक्वल की इमेज को हटा दीजिए. आपने कंटेनर को हटा दिया, अभी इमेज को भी हटा दीजिए. सर इमेज को हटाने का कमांड भी बहुत सिंपल है. जैसे आपने आरएम किया था वो कंटेनर के लिए और आरएम आई करोगे वो इमेज के लिए. समझ में आया सभी को? आरएम आई, give the image name MySQL or image ID also you can mention. Okay, this will remove the MySQL image. ठीक है, अभी आपके इसमें कौन सी इमेज बची है? सिर्फ Nginx की इंस्टेंस में पड़ी है. I have removed MySQL image. So which command I have used? Docker rmi MySQL. Okay, everybody understood? This is a very remove the image rmi command, to remove the container rm command. Okay, so it is बहुत इजी है. डॉकर की सिर्फ कमांड्स आपको याद करनी है और आप डे टू डे प्रैक्टिस करोगे तो वो कमांड याद रखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं. अभी मुझे सर Nginx को बेसिकली रन करना है तो विच कमांड बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज? डॉकर रन कमांड. तो इसको यूज करने के लिए सर आप Nginx की साइट पे चले जाइए. Nginx रन एज कंटेनर कमांड. ओके, आप मेंशन कर सकते हो. सो अभी आपको डिप्लॉइंग Nginx प्लस command. So this will give me the command related information. So यहाँ पे ऑफिशियल Nginx की साइट पे जाके मैं देख सकता हूँ what is the command. Run the docker image. रन कमांड देखिए, रन कमांड, रन कमांड, रन कमांड. सर यहाँ पे मुझे मिल गई डॉकर रन कमांड. मुझे अभी अभी जस्ट मिल कमांड. ओके, सो मैं इसमें डॉकर, ये बहुत डिटेल में दी हुई है, मैं छोटी सी यूज करता हूँ सर.
पाथ मेंशन कर दीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए, डॉकर रन हाइफन आई, नेम ऑफ द हाइफन हाइफन नेम क्या देता है, कंटेनर का नेम। हाइफन पी क्या करता है सर, तो थोड़ी देर पहले सर आपने पी यूज नहीं किया था, तो पी मींस पोर्ट। आप किस पोर्ट पे एक्सपोज करना चाहते हैं इमेज को हमारे होस्ट के। सर हम 80:80, अब सर ये दो दो 80 क्यों है, तो मैं बताता हूँ सर। सर ये nginx कमांड ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक कंटेनर बना हुआ है। सो कंटेनर के अंदर भी हमारी सर्विस रन कर रही है ना, हाँ सर। तो कंटेनर के अंदर सर्विस किस पोर्ट पे रन कर रही है सर, 80 पोर्ट पे रन कर रही है। सो सर दिस इज द राइट साइड ऑफ द 80 इज डिनोटिंग इनसाइड ऑफ द प्रोसेस रनिंग, एंड बाहर का जो 80 है वो हमारे जो सिस होस्ट पे है वहां का मैंने मेंशन किया है। तो अंदर के जो कंटेनर 80 पोर्ट पे है उसको मैप कर दीजिए बाहर के 80 पोर्ट के साथ। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंटेनर हाइफन पी कमांड, और डी मतलब क्या, हाइफन डिटैच मोड में। सो दिस आई एम गोइंग टू रन। अगर आपको किसी कमांड से चेक करना है, डॉकर पीएस हाइफन ए कमांड। नाउ आई एम गिविंग यू सर इंफॉर्मेशन दैट मेरा कंटेनर जिसका नाम है माई रनिंग ऑन माई होस्ट, दिस इज द कंटेनर आईडी, और ये कभी चालू किया 4 सेकेंड्स अगो। अभी इसका स्टेटस क्या है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिस्टार्ट भी नहीं हुआ है। और किस पोर्ट पे चल रहा है, 80 पोर्ट पे। अगर आप कर लोकल होस्ट 80 करोगे तो आपको डॉकर का nginx का इमेज बताएगा, सर वेलकम टू nginx, क्योंकि माय nginx इमेज इज रनिंग। इसीलिए आप जब भी कर्ल कर रहे हो आपका nginx का पेज अभी दिख गया। समझ में आया सभी को? दिस थिंग्स हैज बीन क्लियर्ड एवरीबॉडी? यस यस यस, थैंक यू एवरीवन। सो अभी जो कंटेनर चल रहा है मैं उसको क्या करूंगा सर, बंद करोगे। सो कैसे करूंगा, डॉकर पीएस हाइफन ए कमांड जो मुझे टोटल इंफॉर्मेशन देती है स्टॉप कंटेनर रनिंग कंटेनर। नाउ आई एम गोइंग टू stop this container. What is the command, docker stop, and give the container name or container id, anything you can basically use. Sorry, what is the container name sir, container name is my nginx1। ठीक है, इसने अभी कंटेनर को बंद किया, तो अगर आप डॉकर पीएस देखोगे ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्या बताता है, ऑल बताता है सर। तो अभी आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, हाँ स्टॉप किया है तो स्टार्ट भी, give the nginx, give the container name. So if you go docker ps hyphen a, this is the information. Okay, now sir को परमानेंटली स्टॉप स्टार्ट की झगड़े में पड़ना ही नहीं है मुझे। अभी मैं श्योर हूं मुझे कंटेनर को परमानेंटली किल करना है, रिमूव, rm हाइफन f फोर्सफुली रिमूव कर दीजिए सर। गिव द इंफॉर्मेशन nginx1, दिस विल रिमूव कंटेनर ओवरऑल। मुझे कंटेनर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अभी सर इमेज आपने कंटेनर को तो कर दिया, अभी इमेजेस को भी रन करके लीजिए। तो डॉकर rm i कमांड इज फॉर रिमूविंग इमेज, rm i, कितना इजी है। तो अगर अभी आपको डॉकर इमेजेस में कुछ मिल रहा है क्या, नहीं सर कुछ भी कमांड मिल नहीं रही है, मेरा डॉकर अभी खाली है। सभी को समझ में आ गया हाउ टू रन अ कंटेनर, हाउ टू पुल द इमेज, हाउ टू push the image, how to kill the image, how to remove the container, how to remove container permanently, how to stop the container, how to start docker service, all these things. So in the today's class we have basically covered up these things entirely, everybody. Okay, हाँ डॉकर का यूज कहा है। सो अभी जो भी एप्लीकेशन आप पाइथन रिलेटेड एप्लीकेशन, नोड एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन जो भी यूज कर रहे हो उसके एप्लीकेशन को एक इमेज के अंदर बेसिकली हम लोग कंटेनर में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर इमेज। और जब हम इस इमेज को ट्रिगर करेंगे कंटेनर बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ द डॉकर। और हम बेसिकली कोई भी एनवायरनमेंट हो, आपका ओएस डिफरेंट हो, कर्नल डिफरेंट हो, आपके पाइथन के पैकेजेस अलग हो, फिर भी आप डॉकर की हेल्प की वजह से
एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में आप इमेज को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, बेसिकली इमेज को कहीं भी भेज सकता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड। सो इसके मास्टर कमांड्स हम बैच में आपको इन डिटेल बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली फॉर दैट गाइज यू नीड टू लॉग इन टू www.skillelected.com। वहां पे डेवॉप्स का एक डेडिकेटेड कोर्स इज देयर where you get a complete information about the Docker, Linux, DevOps tools, everything. Okay, and then you can get an a very hands-on experience there. We will teach you deeply all kind of things. Okay, so that is the purpose of today's class. So this is what we have covered today entirely about the Docker images, and give you the basic idea how to install. Also I have given you the information how to install a Docker, how to run it as a सर्विस, एंड मैं आपको डॉकर हब के रिलेटेड जो भी चाहिए वो आप docker.com पे बेसिकली चेक कर सकते हो। ये सपोर्टेड बाय अ कम्युनिटी है, जिसमें कम्युनिटी ने ही अपना डे टू डे डॉकर को इंस्टॉल करके हाउ टू डाउनलोड करना है यहाँ पे दिया हुआ है। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया सर मैक में कैसे इंस्टॉल किया है, सो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू डाउनलोड इन मैक, डाउन टू डाउनलोड इन विंडोज, हाउ टू डाउनलोड इन लिनक्स। हम लोगों ने अभी किस में इंस्टॉल किया, लिनक्स में इंस्टॉल किया है। ओके, सो यहाँ पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपका अगर उबंटू का पैकेज है, डेबियन का है, रेड हैट आरएचएल है, फेडोरा है, तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी इंस्टॉलेशन स्टेप्स यहाँ पे दी गई है। ओके, तो इससे रिलेटेड आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल डॉकर वेबसाइट, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है दिस इज द ऑफिशियल। ओके, सो okay guys, so we will wrap this course. Okay, for that you need to join the skill elected platform। वहाँ हम लोग एंटायरली आपको इन डिटेल टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डॉकर रिलेटेड, डेवॉप्स के अलग अलग टूल, CI/CD टूल, क्लाउड रिलेटेड अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि AWS, दूसरा प्लेटफॉर्म है आपका एज्योर, GCP, गिट एंड गिटहब, लिनक्स रिलेटेड बेसिक थिंग से लेके एडवांस लिनक्स। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म करते हैं पाइथन, बेसिक प्रोग्रामिंग, देन CI/CD जेनकिंस टूल, ओपन सोर्स टूल, अगर आप एज्योर पे है तो एज्योर डेवॉप्स। दिस इज ऑल एंटायरली बेसिकली वी विल गिव यू द ट्रेनिंग ऑफ दिस। फॉर दैट you need to basically log in to www.skillelected.com। okay, so that's it। हमारा आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, my laptop is also giving issues। So okay guys, that's it। If you have a doubt, you just log into www.skillelected.com। our professionals, skillelected professional basically contact you। okay, वहां पे आप इन डिटेल बात कर सकते हो, एंड यू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल जहाँ पे आपको अलग अलग और इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स इट गाइज, मिलेंगे बाद में जब आप लॉग इन करोगे स्किल इलेक्टेड पे। ओके, so that's it, thank you from my side। I'm leaving this for that you just attend the quiz, there is a certificate also there if you attend the quiz on www.skillelected.com, just attend the quiz and solve all the questions। okay, there after that you will get a certificate also। okay, certificate भी मिलेगा everybody। so okay guys, I'm leaving now, thank you everybody।